Today's topic is fungi. The term fungus, the plural word is fungi, has come from Latin word fungus meaning mushroom. It describes a eukaryotic organism that are spore bearing, having absorptive nutrition. They lack chlorophyll and reproduce both sexually and asexually. Scientists who study fungi are known as mycologists, and the scientific discipline devoted to the study of fungi is known as mycology. The study of fungal toxins is called mycotoxicology, and the diseases caused by fungi in animals are known as mycosis or mycosis, which is the singular term. Fungi consist of an enormous group of organisms. About 90,000 fungal species have been described, but the real number is more than 10 times more than this. That is why the taxonomy has been revised several times. The molecular technique, along with morphological and ecological considerations, has led to a better understanding of the phylogenetic relationship between various fungal groups. And that is why there are more known species, more known phylum that exist today. But the six major fungal groups includes Chytridiomycota, Zygomycota, Glomeromycota, Ascomycota, Basidiomycota, and Microsporidia. Zygomycota and Chytridiomycota are paraphyletic. Paraphyletic means that they are descended from a common evolutionary ancestor or ancestral group, but not including all the descendants in the group. Fungi are saprophytes. Saprophytes, as you know, they are live on or they get their nutrients from dead or decaying matter. They secure nutrients from dead organic material and by releasing degradative enzymes into the environment. They are terrestrial globally from polar to tropical regions. Um, Many of the fungi are discovered today, and most recently discovered fungal group, which is known as Cryptomycoda, by studying their molecular level, their RNAs and all. So this Cryptomycota means hidden fungi. They are also thought to be the most primitive type of fungi. Here we will going to study these six major fungal groups which I have told you earlier. Now if we look at the significance of fungi, why they are important, why their study is important. They are important because fungi are important decomposers. They degrade dead organic material in the environment to simple organic and inorganic molecule, and in this way the carbon, nitrogen, phosphorus and other important constituent of dead organic materials are released and they are available for living organism. Fungi, many of the fungi are also pathogenic. About 5,000 species of fungi are known to attack valuable crops and many plants. 20 new human fungal pathogens are documented every year. So that's why they are also very important. Fungi also forms beneficial relationship with other organism, a term which is known as mutualism, and the common example is mycorrhiza, which is the vascular plant roots forms association with fungi, which we'll go to study in soil microbiota. Then the fungi, especially yeasts, which is known as single cell fungi, they are essential to many industrial processes involving fermentation. They are the main source of causing fermentation in different industries. In different studies, as you name it, in making of bread, cheese, wine, beer, and soy sauce. They are also used in the production of
certain organic acids such as gallic acid, citric acid. Fungi are also used to make drugs like ergometrine, cortisone. They are used in the manufacture of antibiotics like penicillin, riboflavin, and they are also used in making of some immunosuppressive agents such as cyclosporin. The yeast Saccharomyces cerevisiae, uh, due to its simple structure and single cell structure, it is the best understood eukaryotic cell, and it is used as a model in research. So, this organism has brought new horizons in biology, genetics, and cancer. Now, if we look at the structure of cells, these are these are the yeast cells, not this one. This is the yeast cell, this is the yeast cell. These are the common sites of fungi you have seen in different environments, and these are the major fungal groups: Basidiomycota, Microsporidia, Chytridiomycota, this is Zygomycota, Glomerulomycota, and Ascomycota. Now you have seen that apart from this, these all have fruiting bodies. This is, protruding from the root going upwards. So that's why fungi are important, because they have fruiting bodies. These are buds in Basidiomycota and Ascomycota, looking like birds. Now if we talk about the structure of fungus, the body of vegetative structure of a fungus is called a thallus. Plural is thalli. Like most bacteria, fungi also possess cell wall. However, fungal cell walls are usually made of chitin. Chitin is a strong but flexible nitrogen containing polysaccharide consisting of N-acetylglucosamine residues. And instead of chitin, some fungal cell walls are composed of other polysaccharides such as mannans, galactosense, or cellulose. Single-celled microscopic fungi are called as yeasts, and multicellular masses are called as molds. So that's why they are microscopic, but due to their fruiting bodies, they appear like a colorful species, and so you can see them with your naked eye. But when you see them under a microscope, you will see these individual fruiting bodies as appear here. Now, if you talk about yeast cells are unicellular fungus. They have a single nucleus that reproduces either sexually or asexually by budding and transverse division, or sexually through spore formation. Each bud that separates from the parent molecule grows into a new cell. They are larger than bacteria, and they are like spherical to egg shape. As you can see here, this is almost appear like an egg. They don't have flagella. This one is not a yeast cell, it's a protozoa. So this one is the yeast cell. They lack flagella. They don't have locomotive organs, and but they contain most of the eukaryotic organelles, as you can see here. These are centrioles, cell membrane, nucleus, pellicle, endoplasmic reticulum, mitochondria, ribosomes, etc. All the organelles that are contained in a eukaryotic cells. Now if we talk about the thallus of a mole, it consists of long branched filaments. This is long branch filaments, which are known as hypha. Hypha is a Greek word meaning web. Singular is hyphae. So
This tangled mass is known as this tangled mass is called a mycelium. Plural is mycelia. So many times we'll see here in many times the cross walls are incomplete, resulting in multinucleated a common site in fungi. Hyphae are composed of an outer cell wall and an inner lumen which contains the cytosol and organelles. A plasma membrane surrounds the cytoplasm and lies next to the cell wall. Now if you look at here, you can see here this one and this one. Can you see the difference? This is not segmented as this one is segmented as a septa. So in some fungi, the protoplasm can pass through hyphae uninterrupted. As you can see here, the protoplasm can go from one cell to another. These are the nucleus. So they are known as aseptate hyphae or coniocytic. These type of hyphae are known as coniocytic. The others that have cross walls like this one creating segments, these are known as septate hyphae or septa. Singular is septum. They may have single or multiple pore that causes the protoplasm to flow. As you can see from here, this one, this is the electron micrograph of a section. So you can see here, this is the single pore that allows this protoplasm to flow from here to here, and many have multiple pores in this septa, as you can see here, like a filter. From there, this protoplasm can flow to the other cell. So these are known as coniocytic, having no septors, and this is, or we can say aseptate hyphae as well, and these are septate hyphae. Now if we come upon the filamentous nature of hyphae, this tangled mass, as you can see here, this tangled mass, and here also these are mushrooms, puff balls, mushrooms. They are also included in the phylum fungi. If you can see here, this mycelia, this filamentous nature, it causes large surface area relative to the cytoplasm, and this makes adequate nutrient absorption possible. So from here we can see, फंजाई पे हम आते हैं. फंजाई का जो टर्म है, ये इसको माइकोटा भी कहते हैं. यूकैरियोट्स हैं ये, वो यूकैरियोट्स हैं जो स्पोर बनाते हैं. इनकी एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन होती है. न्यूट्रिशन पैटर्न जो है ये एब्जॉर्ब करके फिर न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते हैं. इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, एंड दे कैन रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली. जो साइंटिस्ट फंजाई की स्टडी करते हैं उनको हम माइकोलॉजिस्ट कहते हैं, और ये जो डिसिप्लिन है फंजाई की, जो स्टडी है फंजाई की, इसको माइकोलॉजी कहा जाता है. फंगल टॉक्सिन्स की स्टडी को हम माइकोटॉक्सिकोलॉजी कहते हैं. जो डिजीज़ कॉज करते हैं फंजाई एनिमल्स में, उनको माइकोसिस कहा जाता है. आप सिंगुलर और प्लूरल टर्म आराम से देख सकते हैं. दिस एस डिनोट्स फॉर सिंगुलर टर्म, वेयर इज दिस इज प्लूरल. फंजाई एक इनॉर्मस ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का. इसमें तकरीबन 90,000 फंगल स्पीशीज़ अब तक डिस्क्राइब की जा चुकी हैं, और जो एक्चुअल नंबर्स है 10 टाइम्स मोर भी हो सकता है और मोर है. इसलिए इनकी टेक्सोनॉमी जो है वो काफ़ी दफ़ा रिवाइज की जा चुकी है, और इनकी इस डाइवर्सिटी की वजह से इनको एक अलग ही सेपरेट फाइलम में रखा गया. दे आर नॉट इंक्लूडेड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. इनकी पहले शुरू में इनको प्लांट्स में रखा गया था, लेकिन बाद में जब इनकी स्टडी की गई मॉलिक्यूलर लेवल पर और इनके आरएनएस और डीएनएस को देखा गया, तो फिर इनकी एक अलग फाइलम क्रिएट की गई. इन्हीं बेसिस पे
हम इनकी जो लाइफ साइकिल है, रिप्रोडक्शन है और इनकी मॉलिक्यूलर लेवल को देखते हुए 6 मेजर फंगल ग्रुप्स हमारे पास मौजूद हैं और उनमें आपके पास जैसे बेजिडियोमाइकोटा, माइक्रोस्पोरिडिया, काइट्रिडियोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा, ग्लोमेरुलोमाइकोटा और एस्कोमाइकोटा। आप सब की जो है ये फिज़िकल फीचर्स मॉर्फोलॉजी को देख सकते हैं कि सब कितने डिफरेंट हैं और कलरफुल भी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के भी होते हैं। Mushrooms and puffballs, they are also included in fungi, and these are the yeast cells, single eukaryotic cells, single celled होते हैं ये, और these are the best models for study in research. फंजाई की जो स्टडी है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? ये बहुत इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं, यानी ये आपके डेड ऑर्गेनिक मैटर को रिलीज़ करते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स को एनवायरनमेंट में, और फिर उसको फ्री करते हैं ताकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसको यूज़ कर सके। दैट्स वाई क्या होता है कि आपके पूरे एनवायरनमेंट में जो न्यूट्रिएंट्स हैं या एसेंशियल आप कह लें एलिमेंट्स हैं वो हमेशा एक ख़ास परसेंटेज में मौजूद रहती हैं, यानी रिसाइकिल होते रहते हैं। तो डिकम्पोजर्स का काम ही रिसाइकलिंग होता है और दैट इज़ वाई ये बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं इस पूरे इकोसिस्टम का। फंजाई जो है वो प्लांट्स के साथ एक रिलेशनशिप में भी रहते हैं जिसको आप म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इसकी एग्जांपल आपके पास माइकोराइजिया है जो कि वेस्कुलर प्लांट्स की रूट्स के साथ मौजूद होते हैं फंजाई उनकी नोड्यूल्स में टिप, और वहाँ पे एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाते हैं। इसके अलावा जो यीस्ट सेल्स हैं जिनको हम सिंगल सेल फंजाई कहते हैं, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में जहाँ पे फर्मेंटेशन इन्वॉल्व होती है बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। जैसे शुगर की फॉर्मेशन हो गई, आपके पास वाइन, बियर, ब्रेड हो गई। इसके अलावा सर्टन एंटीबायोटिक्स बनाने में हम फंजाई यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज आल्सो डिस्कवर्ड फ्रॉम प्रोड्यूसिंग फंजाई प्रोड्यूसिंग स्पीशी। इसके अलावा आपके पास कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट जैसे साइक्लोस्पोरिन भी फंजाई से आप हासिल करते हैं, कुछ मेडिसिन आप फंजाई से हासिल कर सकते हैं। दैट्स वाई दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा रिसर्च की स्टडी में, बायोलॉजी में और आपकी जेनेटिक्स में जो है, और कैंसर की स्पेशली जो स्टडी है, इन सब में आप जो यीस्ट है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया है, ये बेस्ट अंडरस्टूड यूकैरियोटिक सेल है, तो उसको एज अ मॉडल आप यूज़ कर सकते हैं रिसर्च में। यू कैन सी इट फ्रॉम हियर। ये है सिंगल सेल्ड, इसीलिए इसको आसानी के साथ आप, ये सिंगल सेल्ड है, ये दिस इज यीस्ट सेल, ये वाला नहीं है, ये प्रोटिस्टा का है। इनके फ्लैजिला, ये कोई फ्लैजिला यहाँ पे मौजूद नहीं, ये बड स्कारी, यानी एक यहाँ से बड ग्रो करके दूसरी उसमें जब दूसरा यीस्ट सेल बना देता है, इसी तरह ये रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, तो वो स्कार एक रह जाता है, दिस इज़ नोन एज बड स्कार। बाकी आप इसे देख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, राइबोसोम्स भी हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस मौजूद है। इसके अलावा सेल वॉल मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म, यानी जो भी एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर ऑर्गेनील्स होते हैं वो एक यीस्ट सेल के अंदर भी पाए जाते हैं, और इसकी सिंगल सेल होने की वजह से इसकी स्टडी जो है वो बहुत आसान हो जाती है। इसके अलावा जब आप फंगल बॉडीज़ की बात करते हैं तो इसका जो फिलामेंटस नेचर है, ये चीज़ ये अलाउ करता है बेटर एब्जॉर्प्शन की। दैट इज़ वाई ये स्प्रेड होते हैं अपने होस्ट के ऊपर, और फिर उसके बाद वहाँ से न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें हमारे पास एसेप्टेट हाइफा भी होती है, जो इसकी फ्रूटिंग बॉडी है, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। जो फ्रूटिंग बॉडी है दिस वन, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ हाइफा, और इनके टैंगल्ड मास को हम कहते हैं माइसीलिया, माइसीलियम या माइसीलिया, सिंगल होगा तो माइसीलियम और प्लूरल है तो माइसीलिया। तो ये जब टैंगल हो जाती हैं, टैंगल होके फिर ये स्प्रेड करती हैं, यानी आपस में मिक्स होके जैसे एक नेटवर्क, एक वेब बनाते हैं। इसीलिए इसमें कुछ जो है वो एसेप्टेट होती हैं जिनको हम कोनियोसाइटिक कहते हैं, जैसे ये वाला, इसमें प्रोटोप्लाज्म फ्री है, अनइंटरप्टेड है, एक सेल से दूसरे सेल में आराम से जा सकते हैं। जबकि दूसरे जो है जो सेप्टेट होते हैं, इनमें क्रॉस वॉल्स मौजूद हैं, लेकिन इन क्रॉस वॉल्स में
कहीं कहीं सिंगल पोर मौजूद हो जाता है जैसे इसमें आप देख सकते हैं, और कहीं कहीं मल्टीपल पोर्स मौजूद होते हैं जैसे ये वाली डायग्राम में. सो दीज आर नोन एज सेप्टेट हाइफा, दीज आर एसेप्टेट और कोनियोसाइटिक. देन कम्स इट्स रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन आपको पता है दोनों तरह से हो सकती है फंजाई में, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी. एसेक्सुअल स्पोर्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत सारी तरीक़े से होती है. जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि फर्स्ट वन में ये होता है कि अ पेरेंट सेल अंडरगोज माइटोसिस, डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स बाय अ सेंट्रल कंस्ट्रक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सेल वॉल. एक तो ये तरीक़ा हो गया कि सेल जो है वो माइटोसिस करता है, दो डॉटर सेल्स बनाता है, सेंट्रल कंस्ट्रक्शन हो जाती है यानी बीच से जो है कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाता है आपका सेल, और उसके बाद एक नई सेल वॉल बन जाती है. या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि वेजिटेटिव सेल्स जो हैं वो माइटोसिस में जाते हैं और उसके बाद बडिंग हो जाती है इनकी. बडिंग होने के बाद एक नया डॉटर सेल जो है वो बन जाता है. जो फॉर्मेशन है एसेक्सुअल स्पोर्स की, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाती है, और यही जो स्पोर्स बन रहे होते हैं ये मीन्स होते हैं डिस्पर्सल का. क्योंकि स्पोर्स लाइट होते हैं तो ये इजीली कैरीड अवे हो सकते हैं विंड और वाटर से. Asexual spores are of many types and each one has its own name. जैसे हर जो स्पोर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिपेंडिंग अपॉन द फंगल स्पीशी उस तरह से उसके अंदर मौजूद होते हैं. जैसे इनके एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊं. दिस वन, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, दिस वन इज़ नोन एज आर्थ्रोकोनिडिया. ये ट्रांसवर्स फिशर जो है ये इसकी वजह से ये सेल क्या हो रहा है, अलग हो रहा है. तो ये अलग हो रहा है, फिर इसमें स्पोर्स बन रहे हैं, ये नज़र आ रहा है आपको. सो दिस इज़ नोन एज आर्थ्रोस्पोर्स. ये फ्रेगमेंटिंग हाइफ है यानी ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट में हो जाएगा और ईच वन विल बेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स. सो इस तरह की जो आपके पास स्पोर फॉर्मेशन है, इट इज़ नोन एज आर्थ्रोस्पोर्स. अनदर वन इज स्पोरेंजियोस्पोर्स. ये एक स्पोरेंजियम है यानी एक सैक है जिसके अंदर स्पोर्स भरे हुए होते हैं, ये स्पोरेंजियोस्पोर्स कहलाते हैं. देन द थर्ड वन, this one is transverse fissure forming one. This is a sporangium and ये एक सैक के अंदर है जो हाइफल टिप पे है. ये एक आपकी हाइफा की टिप पे एक सैक है जिसको स्पोरेंजियम कहा जा रहा है, इसके अंदर स्पोरेंजियो फॉर्म मौजूद है. देन वी हैव कोनिडियोस्पोर्स. दिस वन, दे आर नॉट एनक्लोज्ड इन अ सैक. ये सैक के अंदर तो नज़र नहीं आ रहा है आपको, बट प्रोड्यूस एट द टिप्स और साइड्स ऑफ द हाइफी. ये साइड्स ऑफ द हाइफी है, ये देखिए, और यहाँ से ये स्पोर्स बन रहे हैं और रिलीज़ हो रहे हैं लाइक अ फ्लावर. जैसे इसके 5 पेटल्स हो, साइड से भी जा रहे हैं और टिप से भी जा रहे हैं. सो दीज आर नोन एज कोनिडियोस्पोर्स. देन वी हैव ब्लास्टोस्पोर्स. दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेजिटेटिव मदर सेल्स बडिंग. ये जो मदर सेल है इनकी बडिंग जब हो रही होगी तो ये उसकी टिप पे ब्लास्टोस्पोर्स बनना शुरू होंगे. ये भी इनक्लोज नहीं है सैक में. सैक में इनक्लोज्ड है स्पोरेंजियम. So these are the different types of spores which are asexually formed, and they are the representative of asexual reproduction. Then comes sexual reproduction. Sexual reproduction is produced sexually. They are produced by fruiting bodies called buds. Like example is, one of the example is mushroom. Now if we talk about sexual reproduction, it is characterized by the strategical union of two compatible nuclei. और इस पूरे इंटायर प्रोसेस को we can divide them in 3 phases. यानी फ्यूजन होती है कंपैटिबल न्यूक्लाई की, जो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होते हैं हाइफे, वो फिर करीब आते हैं. इसमें हमारे पास 2 तरह की हाइफे होते हैं. एक होमोथैलिक है यानी उसमें जैसे आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन कह लें, और एक जैसे पॉलिनेशन होती है, जैसे
सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन होती है। इसी तरह से इसके आप एग्जांपल ले लें, एक होमोथैलिक होता है, यानी सेल्फ फर्टिलाइजिंग, आपके पास जो है थैलस होता है और माइसीलिया के अंदर, और उसी में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं सेक्सुअली कंपैटिबल गैमीट्स सेम माइसीलियम पे। और एक होते हैं हीट्रोथैलिक। हीट्रोथैलिक जो है इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, यानी इनमें डिफरेंट लेकिन सेक्सुअली कंपैटिबल माइसीलिया जो है वो मिलते हैं और देन दे फॉर्म their union. So, depending upon the species, sexual fusion may occur between haploid gametes by gamete producing bodies which are known as gametangia by a process known as plasmogamy. The first phase in this sexual reproduction is plasmogamy, which is the union of gametangia. जो सेक्स ऑर्गन्स हैं ये न्यूक्लियाई को करीब ले आते हैं क्लोज प्रॉक्सिमिटी में एक ही प्रोटोप्लास्ट के अंदर. Then sometimes the cytoplasm and haploid nuclei fuse immediately to produce diploid zygote, as we seen in higher eukaryotes, but usually there is a delay in cytoplasmic and nuclear fusion. This stage is known as karyogamy, that is the fusion of the two nuclei. This produces a dikaryotic stage in which cells contain two separate haploid nuclei, n plus n, one from each parent. After this period, that dikaryotic stage, meiosis occurs and the two nuclei fuse and undergo meiosis to yield haploid spores. This is seen in both Ascomycetes and Basidiomycetes. They are known, and these two classes are known as dikaryotic fungi. You can see इट हेयर. ये एक डिफरेंट हर स्पीशी की डिफरेंट होती है या, लेकिन यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले ये दो न्यूक्लियाई हीमेटिन टाइप है, एक ही तरह के कंपैटिबल माइसीलिया एक दूसरे के नज़दीक आते हैं. देन गैमेटेंजिया, ये नज़र आ रहा है आपको, ये वाला स्ट्रक्चर, इसके अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई यानी वन फ्रॉम हेयर एंड वन फ्रॉम हेयर. यहाँ पे ये हैप्लॉइड न्यूक्लियाई के साथ गैमेटेंजिया क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ गया. दिस इज नोन एज प्लाज्मोगेमी, दिस स्टेज. देन व्हाट हैपन्स, ये नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से ये दो तरह के सेल्स बन गए. नाउ दे विल फॉर्म दिस यंग zygosporangium विच इज़ डाइकैरियोटिक, दिस वन. यहाँ से ये एक एक दोनों पेरेंट माइसीलिया से एक एक हैप्लॉइड सेल लेते हैं और देन दे आर गोइंग टू फॉर्म दिस डाइकैरियोटिक zygosporangia. This is diploid, it contains 2n nuclei. Now it will undergo meiosis and then it will form sporangium, जिससे स्पोर्स बन जाएंगे. ठीक है, meiosis यानी फिर नहीं ये चलेंगे, ये हैप्लॉइड क्या बनाएंगे, सेल्स बना देंगे जो कि स्पोर्स की फॉर्म में स्पोरेंजियम के अंदर मौजूद है. यहाँ से इसकी ये एसेक्सुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, यानी ये स्पोर्स जो हैं फिर जर्मिनेट होंगे, फिर नया माइसीलियम बनाएंगे और फिर ये फ्रूटिंग बॉडीज़ बन जाएंगी. और इसी तरह से ये फर्दर जाएंगे तो ये जर्मिनेट होंगे, फिर माइसीलिया बनेंगे और फिर दो कंपैटिबल माइसीलिया दोबारा से मेटिंग करके प्लाज्मोगेमी का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे. सो दिस इज़ द होल लाइफ साइकिल ऑफ अ फंजाई. हर स्पीशी का डिफरेंट हो सकता है, पर आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये काफ़ी है. This is plasmogamy, karyogamy and then meiosis, and then it will undergo this cycle again. और यहाँ से जब स्पोर्स बन जाते हैं तो they can undergo asexual reproduction as well. फंजाई की जो स्पोर्स हैं they are of important character. क्यों? क्योंकि ये फंजाई जो हैं the spores they enable fungi to survive environmental stresses, जैसे डेसिकेशन हो गई, न्यूट्रिएंट लिमिटेशन हो गई, या बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर हो गया, एक अगर पानी की कमी हो जाती है, कोई न्यूट्रिएंट की लिमिटेशन आ जाती है, कहीं बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर है, तो इन सब सूरतों में ये स्पोर्स जो हैं फंगस को एनवायरमेंटल स्ट्रेस से बचाते हैं. और इसके अलावा
लेकिन ये इतने रेजिस्टेंट नहीं होते जैसे बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं। ये फंगल डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं, यानी जहाँ जहाँ डिस्पर्सल होना होता है फंजाई का वहाँ पे ये हेल्प करते हैं। स्पोर्स लाइट होते हैं, स्मॉल होते हैं, तो ये काफ़ी देर तक सस्पेंड कर सकते हैं एयर में। इसके अलावा ये क्योंकि लाइट भी होते हैं और सस्पेंडेड होते हैं एयर में, तो ये बहुत सारे इंसेक्ट्स, बहुत सारे एनिमल्स के ऊपर भी स्टिक हो जाते हैं और फिर वहाँ से भी ये उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का बाइस बनते हैं। दे आर ऑफ ब्राइट कलर्स एंड फ्लफी टेक्सचर विच इज़ ड्यू टू द एरियल हाइफा, जो हाइफा इनका यानी फ्रूटिंग बॉडी ऊपर जो उठ रही होती है उसकी वजह से और स्पोर्स की वजह से इनके कलर्स भी आपको ब्राइट फ्लफी टेक्सचर के साथ नज़र आते हैं। फाइनली साइज, शेप और कलर और नंबर ऑफ स्पोर्स दे आर यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंगल स्पीशी, यानी इनकी स्पोर्स की वजह से फंगल स्पीशी की आइडेंटिफिकेशन में भी आसानी होती है। सो now in the next lecture we will continue the classification of fungi.